Hello students, today we are going to start our chapter 4 of class 6th science, and the name of the chapter is sorting materials into groups, right? So the agenda of this chapter means the topics which we will discuss in this chapter is objects around us, second properties of materials, and third is need to group objects. Now let us start with our chapter. First is objects around us. Let us discuss about the objects around us. Objects are made up of two or more materials. One material can be used to make different types of objects. So what they are saying that objects are made up of two or more materials, कि हमारे आसपास जो objects हैं वो दो या दो से ज़्यादा material से बने हुए हैं. One material can be used to make different types of object. एक तरह का मटीरियल एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है. इट कैन बी मैन मेड और नेचुरली अकरिंग. जो मटीरियल हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं. मटीरियल इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो मटीरियल इज़ अ सब्सटेंस जिससे हम अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. सो व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड अवरसेल्व्स सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब आप अपने आसपास देखोगे आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, शार्पनर, इरेजर, हाइलाइटर्स, कैलकुलेटर, एक्सेट्रा. Some of these different objects are made from a number of different materials while others are made using the same material. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं आप नोटिस करोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सेम मटेरियल के बने होते हैं बट सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड. जैसे कि आपकी क्लासरूम में जो डेस्क और चेयर है वो दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दैट इज फ्रॉम वुड. while pen and dustbins are made using plastic. और पेन और डस्टबिन किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से. So the material from which an object is made depends on its properties. So जिस मटेरियल के साथ हमारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज पे. तभी हमें पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है. हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ वुड, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन. ऑल दीज आर इट्स properties. So let us discuss about the properties of materials. So let us see the properties of material. There are 5 properties of materials. First is appearance. Appearance means कि materials हमारे जो हैं वो देखने में कैसे हैं, उनकी appearance कैसी है. This is the most important. Second is hardness, कि जब आप उसको टच करोगे तो वो हार्ड है या सॉफ्ट है, आप उसको ईजिली कंप्रेस कर सकते हो या नहीं. थर्ड इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल. सोल्यूबल मीन्स क्या वो वाटर में मिक्स हो सकते हैं, क्या वो किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं या फिर दूसरे मटेरियल्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, दैट मीन्स सोल्यूबल. फोर्थ प्रॉपर्टी इज फ्लोट और सिंक. क्या आपके मटेरियल्स फ्लोट करते हैं वाटर में या फिर सिंक करेंगे. एंड द लास्ट इज ट्रांसपेरेंसी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज अपीयरेंस. Appearance means how your material look. So materials can be classified on the basis of how they look or appear to be. तो materials को हम उनकी appearance के साथ भी classify कर सकते हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं. मे बी वो शाइनी हो सकते हैं, मे बी उनकी अपीयरेंस डल हो सकती है, मे बी उनके कलर्स ब्राइट हो सकते हैं, मे बी उनके कलर्स लो हो सकते हैं. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज लस्टरस. लस्टरस मीन्स शाइन, right? So some materials have luster, which is a very gentle sheen or soft glow to them. Materials that have such luster can usually be classified as metals. So कुछ materials ऐसे होते हैं जिनके पास luster means shine. कुछ materials ऐसे हैं जो कि जिनके पास shine होती है अपनी, जो shine करते हैं. So that materials which have shine can usually be classified as metals. So metals ऐसे materials हैं जिनकी अपनी shine होती है, which have luster. For example, gold, copper, aluminium, iron, etc. So all these are the lustrous materials. Next is non-lustrous. Non-lustrous means, अब हमें पता है, नेम से ही पता लग रहा है हमें, non-lustrous means non-shiny, जिनके पास shine नहीं है. So some materials do not have luster.
कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी शाइन नहीं होती एंड दे आर प्लेन एंड डल लुकिंग, वो देखने में प्लेन लगते हैं और बहुत डल लगते हैं. मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव सच लस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स. सो वो मटेरियल्स जिनके पास शाइन नहीं है, विच डू नॉट हैव द लस्टर, दैट आर नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल वुड, rubber, a piece of rock, etc. So all these are the non-lustrous materials. So you can easily identify the materials by their appearance, whether they are lustrous or non-lustrous. Now the second property is hardness, that whether your material is hard or soft. So materials can also be classified on the basis of hardness. Materials can be easily compressed or scratched are called soft. So वो materials जिनको आप easily compress कर सकते हो या फिर scratch कर सकते हो, that are called soft materials, like your soft toys. And the materials that cannot be scratched and are difficult to compress are termed as hard materials, like rock. These are the hard materials. So we can also classify our materials on the basis of hardness, whether our material is soft or hard. Third property is solubility. Solubility means that whether your material will dissolve in the water or not. So the materials can be classified on the basis of solubility. The materials that can be dissolved in water upon stirring are said to be soluble materials. तो वो materials जो कि water में dissolve हो जाते हैं, जब आप उनको water में डाल के mix करोगे, stir करोगे, हिलाओगे, then they will mix in water, dissolved in water completely. That materials are called soluble materials. For example, sugar and salt can be dissolved in water. तो वो मटेरियल्स जो कि वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूबल मटेरियल्स. जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल मटेरियल्स. So next, materials that cannot be dissolved in water, no matter how much we stir them, are said to be insoluble materials. तो कुछ materials ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी water में dissolve नहीं होते, चाहे आप उसको जितनी देर मर्जी हिलाते रहो, जितनी देर मर्जी stir करते रहो, still भी वो water में mix नहीं होते. So that materials are called insoluble materials. For example, stones and clothes, mud, sand, these cannot be dissolved in water. जैसे कि सैंड होती है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, जितनी मर्जी आप उसको मिक्स करते रहो, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो फिर से नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, राइट, सेटल डाउन हो जाती है वाटर के अंदर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनसोल्यूबल मटेरियल, राइट. सो नेक्स्ट, not just solid materials, even liquids have the property of being soluble or insoluble. So only solid materials के पास ही नहीं ये प्रॉपर्टी होती, even liquids के पास भी ये soluble और insoluble की प्रॉपर्टीज होती हैं. अर्लियर हमने डिस्कस किया जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये क्या है, सॉलिड मटेरियल्स हैं कि ये सॉल्यूबल है. उसके बाद सैंड, मड, स्टोन, ये क्या है, इनसॉल्यूबल है. तो अब बात करते हैं लिक्विड्स की. तो हमने सॉलिड मटेरियल्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब सॉलिड मटेरियल्स के अलावा लिक्विड्स भी होते हैं जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, लेमन जूस कैन ईजिली डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल ऑयल डज नॉट डिजॉल्व. जैसे कि जो लेमन जूस है वो ईजिली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज सोल्यूबल, while oil does not dissolve and deposit as a thin layer on the uppermost layer of water. और जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, that's why it is called insoluble. So soluble liquids are also called miscible and insoluble liquids are also called immiscible, right? So as you can see in the pictures, first is the picture of soluble or miscible liquids that can be easily mixed in other liquids, that can be easily mixed in water, that are called soluble or miscible liquids. And the other is the example of oil that is not soluble in water, that's why it is called insoluble or immiscible, correct? Now let us see, objects may float or sink in water. Now the next property is
whether your objects will float or sink in water, right? There are some insoluble materials which sink to the bottom of the surface when dissolved in water, while some other float on the surface of the water. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि वो हमारे सरफेस में जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो नीचे जाके बॉटम ऑफ द सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में नीचे सेटल डाउन नहीं होते, वाटर के ऊपर ही फ्लोट करते हैं. फॉर एग्जांपल लीव्स एंड कॉक्स फ्लोट इन वाटर वाइल रॉक्स एंड कॉइन्स सिंक इन वाटर. जो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, कॉक है, वुड है, वो क्या होगा, वाटर में फ्लोट करेंगे, और जो रॉक्स हैं, कॉइन है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे. सो द मटीरियल्स विच सिंक इन वाटर इज डेंसर देन वाटर. तो कुछ मटीरियल जो वाटर में सिंक करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है. सो मटीरियल्स विच सिंक इन वाटर इज डेंसर देन वाटर. नेक्स्ट, द मटीरियल्स विच फ्लोट ऑन वाटर इज लेस डेंसर देन वाटर. तो वो मटीरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होएगी वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, और वो मटेरियल जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होएगी दैट विल सिंक इन वाटर. सो दिस इज द very important property of objects, that whether they will float or sink. Next is transparency. Last property is transparency. Now the objects or materials which can be seen through are said to be transparent objects. वो objects या materials जिनके थ्रू हम बहुत easily, बहुत clearly देख सकते हैं, that are called transparent objects. For example, glass, clear water, and some plastics can be seen through and are hence transparent materials. So some of the transparent objects are like this lens, transparent glass, and this spectacles. So this is an example, these are the examples of transparent objects. So transparency means whether your material is transparent, whether you can see through it or not, right? So first was transparent objects. Next is under transparency, next type is translucent. So the objects or materials through which things can be seen but only partially are called translucent objects. तो वो objects जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं but not clearly, जिनमें से हमें clearly नहीं दिखाई देता, partially दिखाई देता है, that are called translucent objects. For example, butter paper, frosted glass are some of the examples of translucent objects. Like this butter paper, frosted glass, and this bulb. All these are the examples of translucent objects. So under transparency, next type is opaque objects. Objects which cannot be seen through are known as opaque objects. वो objects जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, right? Through which we cannot see are called opaque objects. For example, metals, wood, cardboard are some examples of opaque materials as we cannot see through them. Some of the examples of opaque objects are stone, rocks, wood, and plastics. Some of the plastics are opaque. So these were the three types of transparency. First was transparent materials, next is translucent, and the third one is opaque. So these were the properties of the materials by which we can classify them, right? Now next let us see what are solute, solvent, and solution. So the substances which are dissolved in water are called solute. तो वो substances जिनको आप water में mix करते हो that are called solute. Like salt को आप water में mix करते हो तो जो salt है वो क्या हुआ, solute. Sugar को आप water में mix करते हो तो sugar क्या हुआ, solute. Next is solvent. The substances in which solute is dissolved to make solution are called solvent. तो वो substances जिसके अंदर आप solute को mix करते हो that is called solvent. So water एक universal solvent है जिसके अंदर आप mix कर सकते हो किसी को भी, जैसे कि आप salt mix करते हो water में, so water क्या हुआ, solvent. Sugar mix करते हो water में तो water क्या हुआ, solvent, right? The next is solution.
The mixture of solute and solvent is called solution. जब आप solute को solvent में mix करते हो तो mix होने के बाद एक solution बनता है, that is called mixture. The mixture of solute and solvent is called solution. So these were the solute, solvent and solution. Next is how are materials grouped. अब materials को identify करने के लिए उसकी properties हमने पढ़ ली कि these were 5 properties we have already discussed. Now the materials are grouped. How they are grouped? The things made from wood, जो wood से बने things होते हैं उनको हम अलग से separate रखते हैं. The things made from fiber, things made from ceramic, things made from glass. Next is things made from plastics, things made from rubbers. So all these are the materials which are grouped, different materials, right? So why do we need to group objects? अब हमें objects की grouping क्यों ज़रूरी है? क्यों हम wood के objects separate हैं, iron के objects separate हैं, glass objects are separate? Why we need to group our objects? Because it helps in the identification of objects. इससे हमें objects को identify करना easy हो जाता है कि ये glass के जो objects हैं वो इधर पड़े हैं एक side पे, तो wooden objects ये वाले हैं, तो identification में बहुत help करते हैं. That's why we need to group our objects. Next is it helps in sorting of objects. Next it helps in locating things. आप easily अपने things को locate कर सकते हो, easily ढूंढ सकते हो कि कौन से मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं, अगर आपने उनको ग्रुप किया हुआ है. अगर आपने ग्लास ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की हुई है, वुड ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की हुई है, देन यू कैन इजीली लोकेट योर ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इट मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इजी. यू कैन मेक study your different objects study easy, that these are the wood objects, these are the glass objects. It also helps to understand similarities and dissimilarities among objects. Also it helps in storing objects. Like for example, in your kitchen your mother is keeping the different objects at different places, like she is putting the steel utensils at different places and glass utensils at different place. So she is sorting the objects in the kitchen, she is keeping the steel utensils at separate place and glass utensils at separate place, wooden things at separate place, plastics at separate. So it also helps in storing the objects. So thank you students. I hope you understand all the topics of this chapter. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on Facebook, LinkedIn and Instagram.